Hello बच्चों, let's read this question. Gymnosperm, the evergreen plant in which the seeds are naked and the sporophylls are aggregate to form the cones, include the following species. Option A, Silaginilla and Marsilia, Silaginilla and Marsilia. Option B, Cycas and Pinus. Option C, P and Maize. And option D, liverworts and mosses. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जिम्नोस्पर्म जो एवरग्रीन प्लांट है, इन विच द सीड्स आर नेकेड मतलब नॉट कवर बाय फ्रूट्स एंड स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेट टू फॉर्म्स द कोन्स. स्पोरोफिल्स एग्रीगेट होकर कोन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. तो उनमें कौन कौन से स्पीसीज है तो हमने इन शॉर्ट ये पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म में जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन से स्पीसीज जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं वो हमें बताना है. So key concept key concept here is gymnosperm gymnosperm species gymnosperm species. Now let's start with the explanation से start करते हैं. Explanation. So gymnosperm is a type of plants. Gymnosperm is a type Gymnosperm is a division gymnosperm is a division gymnosperm is a division in which the plants are in which the plants are present in which the plants are present in which the plants are present which have the seed which have मतलब ये एक डिवीजन है जिनमें प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं which have the seeds that are not covered by seeds होते हैं which are not covered which are not covered not covered by fruits so this is called your gymnosperm. तो जिम्नोस्पर्म में गिवन ऑप्शन में जो जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है वो है दैट इज बी साइकस एंड पाइनस साइकस एंड पाइनस साइकस एंड पाइनस साइकस एंड पाइनस are the gymnosperm species are the gymnosperm species so option B that is Cycas and Pinus is the right answer. Other options की मैं बात करूँ other option that is Silaginalia and Marsilia. These are the group of plants belong from pteridophytes. So then C option की मैं बात करूँ that is P and maize. P and maize are belong from a division called angiosperm जिनमें क्या होता है in which the seeds is covered by fruits. Seed is covered by fruits. Seeds किससे cover होते हैं fruits से. So that is your P and maize is your angiosperm. Then option D की मैं बात करूँ liverworts and mosses. They are bryophytes. And they are also called as amphibians, bryophytes, and they are the amphibians of the plant kingdom. Amphibians
of plant kingdom. Amphibians है plant kingdom scale, in which they live on land, they live on land, live on land, and require water for fertilization, and require water for fertilization, fertilization. So हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? जिम्नोस्पर्म द एवरग्रीन प्लांट इन विच द सीड आर नेकेड एंड स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेट टू फॉर्म्स द कोन्स, include the following species, that is your Cycas and Pinus. So option B, that is Cycas and Pinus, is the right answer. So final answer की मैं बात करूँ, so the final answer here is final answer here is Cycas, option B, Cycas and Pinus, Cycas and Pinus. So I hope you will understood this concept. Thank you and best of luck.